kindly join us on the dais. Okay. Ladies and gentlemen, the President. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India has arrived. Please rise and welcome Honorable President Madam. I request you all to kindly remain standing with national anthem.
I request you all to please be seated. Thank you. Namaskar, good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, we extend a warm and hearty welcome to you all in this special program under SAW, Skilling for AI Readiness, an initiative of the Skill India mission, marking the conferment of the AI certificates, launch of IGNOU Regional Center and Skill Center at Rairangpur, Mayurbhanj, Odisha, and the launch of the National Awareness Campaign, hashtag Skill the Nation Challenge. We are deeply honored to have the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhanji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Education, Government of India, Shri Jayant Chaudhary, Honorable Members of Parliament, Mr. Sanjay Kumar, Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, Ms. Debashri Mukherjee, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Vineet Joshi, Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, Professor Uma Kanjilalji, Vice Chancellor, IGNOU, senior officials from Government of India, respected teachers and dear students, our tech partners, and other esteemed guests present here, and those who are virtually connected, we welcome you all in this special program. And to commence today's proceedings, for the welcome address, may I request Honorable Minister of State, Independent Charge for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Government of India, Shri Jayant Chaudhary ji. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhanji, Secretaries of Ministry of Education, Sanjay Kumarji, Vineet Joshiji, Secretary MSDE, Vice Chancellor of IGNOU, Honorable Members of Parliament, distinguished guests, students, academicians, members from industry, our colleagues. It is indeed a privilege to welcome you all to Rashtrapati Bhavan on the first day of the year. It's a fitting moment and setting to begin the year with an appreciation for lifelong learning, with readiness for dynamic change, and with a clear commitment and resolve for the future. Today marks a set of very important milestones. We are recognizing young student learners and also honorable members of parliament who have completed skilling for AI readiness courses. We are inaugurating IGNOU's Rairangpur Regional Center and launching the hashtag Skill the Nation Challenge, which is a national call for citizens to actively participate in India's skilling journey. I'm deeply grateful to the Honorable President of India for being with us today. Her presence sends a very powerful message that curiosity, learning, and preparedness for new technologies are central to India's national vision. I also thank Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhanji, for his leadership in aligning education and skilling with the country's evolving dynamic needs. Artificial intelligence is not science fiction. It is no longer a distant concept. It is already reshaping how we learn, work, and solve problems. Steve Jobs had once commented that computers are the bicycles of the mind. If so, then potentially today AI could be considered as an EV mass transport mobility solution on the knowledge superhighway. The real question before us is simple. Are our people in India prepared to engage with this empowering but disruptive new technology confidently and responsibly? India's answer has been clear. Through the India AI Mission and National Education Policy 2020, we have placed a very strong emphasis on early exposure, institutional capacity, and lifelong learning. Global assessments also reflect this direction. Stanford University's 2025 AI Index ranks India third on the Global AI Vibrancy Index. This progress is encouraging, but also reminds us that leadership in AI will ultimately depend on how well we are able to skill our people.
And this is where SOAR comes in. Launched in July 2025 as the Skill India mission completed 10 years, SOAR set out to demystify AI and make it accessible across regions and backgrounds. And it goes beyond awareness. The focus is on building confidence, capability, and real readiness to create and use technology with purpose. With about 1.6 lakh enrollments across structured learner pathways and an AI for Educators program, SOAR captures India's growing appetite for future-ready learning. In fact, I also stand before you today, not as a minister, but as a stakeholder in the Skill India mission. I join our honorable MPs, as even I have completed the free online AI course recently on Skill India Digital Hub. And I view this as a very important accomplishment in my own learning journey. I invite students, workers, educators, and institutions to join the Skill the Nation Challenge, because the idea is to move skilling from a government program to a people-led movement. In reflection, this challenge is also central to the key pillar and promise of the National Education Policy, which promotes access, quality, and equity, and calls for us to integrate technologies in every aspect and every stage of our academic experiences. Accordingly, we are strengthening our capacities in the institutional level. On 23rd December 2025, the Skill Ministry announced a partnership with NCVET, Google, and Chaudhry Charan Singh University, Meerut, to develop a model for AI skill adoption. What succeeds here could guide institutions across the country. The inauguration of IGNOU's Rairangpur Regional Center brings quality education and skilling closer to learners and reinforces our commitment to reaching every part of the country. As we look ahead, our focus remains clear. AI must expand opportunity, strengthen inclusion, and support national growth. And India's learners must be prepared not just to adapt to the future, but to shape it. I'd like to end with a simple thought. When learning becomes a national movement, our progress becomes inevitable. Thank you. Thank you, Honorable Minister of State, Independent Charge for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Government of India, Shri Jayant Chaudhary, for your opening remarks. And may I now request Honorable Minister of State, Shri Jayant Chaudhary, to kindly felicitate Honorable President Madam by presenting a shawl and a memento. माननीय राष्ट्रपति जी, ये आपको बताना चाहेंगे, ये पेंटिंग जो है वो जन शिक्षण संस्थान भुवनेश्वर की महिला ट्रेनी ने तैयार किया है. Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, we present a short video on SOAR, Skilling for AI Readiness, an initiative of the Skill India mission. India's vision for artificial intelligence is clear. Technology must empower every citizen and create opportunities for all. सरकार ने देश के एआई क्षमता को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है. In July 2025, India moved to prepare its youth for an AI-driven future, not as a privilege for a few, but as a right for all. Guided by this vision, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched SOAR, Skilling for AI Readiness. SOAR was designed to make AI accessible, introducing learners to AI concepts, ethical use, and future opportunities through structured, self-paced learning. SOAR created learning pathways for students of classes 6th to 12th through 3 progressive micro-credentials: AI to aware, acquire, and aspire. Educators too were empowered with a specialized module to integrate AI into classrooms with ethics, inclusion, and responsible use. In a short span of time, SOAR has reached learners across the country,
translating awareness into meaningful participation and certification. Today, SOAR has reached more than 1.59 lakh learners, with thousands successfully earning certifications and building confidence in their digital future. अब इस मॉड्यूल को करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आने वाले समय में एआई किस तरह से एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हर फील्ड में हम सब की जिंदगी को प्रभावित करने वाली है. Behind every number is a story. A young girl from MV Gurugram discovering AI for the first time. And this course, I learned so many new things. It sounds like our textbook. It includes infographics, videos, and so many examples that all things make it very easy. A teacher reimagining the way learning can happen. This course is designed to build practical AI knowledge to the teachers rather than giving theoretical knowledge. In this course, they emphasize on creation of content, creation of assessment structures that helps educators. A student realizing that AI is not just technology. This program made me confident of using AI tools in my daily life and in my academics and motivates me to upgrade my skills in this emerging technology. AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेहतर प्रशासन, बेहतर संपर्क, बेहतर निर्णय लेने की एवं एक सशक्त साधन. So, for generations that learns, leads and builds with AI. AI for all. Skilling for AI readiness. Empowering young minds. Enabling India's AI potential. We now humbly request Honorable President Madam to kindly virtually inaugurate the IGNOU Regional Center and Skill Center at Rairangpur Odisha. As we step into the new year, we reaffirm a simple but powerful truth. Education and skills together are the foundation of national development. For nearly 4 decades, IGNOU has transformed access to higher education, taking learning to the doorsteps of millions across India and abroad. Established by an Act of Parliament in 1985, IGNOU was created to serve those beyond the reach of the conventional system. Today, with 3.9 million learners across 350 academic programs, IGNOU reflects the diversity of our nation across age, gender, geography, and socio-economic backgrounds, united by aspiration. Our mission rests on 3 enduring principles: education for all, reaching the unreached, and inclusion of the marginalized. As India advances towards a knowledge-based and skill-driven economy, IGNOU aligns closely with the National Education Policy 2020, emphasizing multidisciplinary learning, employability, and lifelong education. Skill education is central to employability and entrepreneurship. In collaboration with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, IGNOU is establishing skill centers under PMKVY across 70 regional centers, bridging education and work with nationally aligned job roles. We begin the year by inaugurating a new regional center and skill center at Rairangpur, Mayurbhanj, Odisha, an aspirational, predominantly tribal region, bringing higher education, skills, and livelihoods closer to communities. The center will offer skills in agriculture, food processing, tourism, hospitality, retail, IT and ITES, and entrepreneurship, enabling sustainable careers and enterprises. As IGNOU enters its 5th decade, with the blessings of the Honorable President of India, the visitor of IGNOU, we reaffirm our commitment to an Atmanirbhar and Vikasit Bharat, where education and skills empower every citizen.
We now invite Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhanji, and request Honorable Minister Sir to kindly deliver his address. नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप तथा शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी, रायरंगपुर में उपस्थित उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री गणेश राम खुंटिया जी, कृष्ण चंद्र महापात्र जी, मयूरभंज की लोकसभा की सदस्य आदरणीय नवचरण माझी जी, रायरंगपुर की विधायक आदरणीय जलेन नायक जी, पद्मचरण हाईब्रू जी, भादव हंसदा जी तथा यहाँ मंच पे उपस्थित भारत सरकार की शिक्षा सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, स्किल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय देवश्री मुखर्जी जी, उच्च शिक्षा संस्थान की सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी, इग्नो के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, मयूरभंज के आदरणीय कलेक्टर हेमकांत साय जी, एसपी वरुण गुंटापल्ली जी तथा इग्नो के रीजनल डायरेक्टर मनोज कुमार दास जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण, स्कूल की विद्यार्थी भाई और बहनों और शिक्षा विभाग, स्किल डिपार्टमेंट तथा सभी सरकार की अधिकारी मित्रगण, अन्य नागरिक मित्रगण और रायरंगपुर उपस्थित समस्त भाई भौणी माने, गुरुजन माने, सांबादिक बंधुगण, आज एक बहुत ही अच्छे दिन है। एक तो इंग्लिश कैलेंडर में आज साल की पहला दिन है, कुछ अच्छा काम से ही साल शुरू होना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस प्रकार की दो केंद्र का आज समाज को लोकार्पित किए और एक स्कीम की अखिल भारतीय एक प्रकार से प्रारंभ किया गया। रायरंगपुर में इग्नो की एक रीजनल सेंटर बनाई गई। मैं उसके लिए रायरंगपुर की सभी विद्यार्थियों को जो इग्नो से आने वाले दिनों में जुड़ेंगे उनको शुभेच्छा देता हूं, उनको बधाई देता हूं। उड़ीसा सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके इग्नो को मैं भी धन्यवाद देता हूं वहां के रीजनल सेंटर को स्थापित करने के लिए। दूसरी ओर मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इग्नो को चुना नॉलेज पार्टनर के नाते उस रीजनल सेंटर में, जो नॉर्मल इग्नो की कोर्स के साथ साथ समाज में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, रोजगारी बढ़े, उद्यमिता बढ़े, स्किल डिपार्टमेंट की ही मैंडेट है। उन्होंने इग्नो को पार्टनरशिप देते हुए स्किल डेवलपमेंट की भी एक सेंटर आज वहां लोकार्पित किया है। इस दो सेंटर की लोकार्पण के अवसर पे मैं मयूरभंज वासियों को, उड़ीसा के नागरिकों को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। ये इसीलिए सफल हो पाई है, देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो खुद ही एक जीती जागती मिसाल है। शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। इसलिए जब उनके पास दायित्व आई, उन्होंने उस दायित्व को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मार्गदर्शन किया, दायित्व दिया कि हमें इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बनाएं जिससे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले लोग उसकी फायदा ले। इस प्रकार के आज एक शुभ अवसर आई है। राष्ट्रपति जी का जिंदगी अपने आप में वैल्यूज और डिग्निटी का एक उदाहरण है। मैंने कहा कि एक शिक्षा कहां तक हमको ले जा पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर भारत की आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहला शर्त है भारत के नागरिकों की इकोनॉमिक आउटपुट बढ़े। आज भी हमारे देश में जितने वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की आयु में 50% लोग वर्कफोर्स में आते हैं। उनका भी कैपेसिटी एक विषय, उनका दक्षता ही एक विषय है। मैं मानता हूं आज जो उड़ीसा के एक सुदूर इलाका रायरंगपुर में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति में हम एक नई प्रकार की आयाम शुरू कर रहे हैं।
भारत की ग्रामीण इलाका की, भारत की आदिवासियों की, भारत की वंचित वर्ग के लोगों की, भारत की पिछड़े लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनको स्किल करने में इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ी कदम होने वाला है। हम लोग लंबी छलांग लगाएंगे। हमें विकसित भारत बननी है प्रधानमंत्री जी की योजना से, तब हमें कम से कम हमारी वर्कफोर्स की संख्या को बढ़ानी पड़ी, जो आज 50% है। देश में 15 से 59 की आयु में लगभग 90-95 करोड़ लोग हैं। काम करने वाले लोग 45-48 करोड़ लोग हैं, यानी इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, उनकी दक्षता को बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसीलिए आज बहुत उत्साहित हूं। अभी जैसे कुछ दिन पहले, अभी मैं थोड़ा ईर्ष्या भी करता हूँ राष्ट्रपति महोदया, जो सांसद सब एआई की सर्टिफिकेट ले गए, हमसे वो आगे चले गए। मेरे को खूब, जयंत जी भी हमारे तो ऐसे ही स्मार्ट है, आगे ही है ही, लेकिन मेरे को जल्दी ही एक एआई कोर्स सर्टिफिकेट खुद के लिए लेना ही पड़ेगा। और मैं आज मेरे सभी सांसद मित्रों को बधाई देता हूं, और विशेष करके जो बच्चे इसी साल 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस करने वाला है, उस समय में देश को अगर हमें एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, हमारी नई पीढ़ी को एआई के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करानी पड़ेगी। मैं मानता हूं 21वीं सदी में विशेष करके भारत जैसे दुनिया एआई को डर रहा है, हम एआई को यूज करेंगे। भारत आज भी डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया की अव्वल नंबर की देश बन चुका है। हमारी यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ा पेमेंट लेन देन की व्यवस्था सॉफ्टवेयर बन चुकी है। आने वाले दिनों में आज जिसकी बीजारोपण आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथ में हो रहा है, आने वाले दिनों में हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है, और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल जो उन्होंने एक शोर कार्यक्रम चलाए हैं, अनेक विभाग इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। बंधुगण, आज जो मैंने रायरंगपुर ये उपस्थित अच्छा कार्यक्रम ने मु तांको विशेष करके बहुत बहुत कृतज्ञता राष्ट्रपति महोदया को जणेमा सह ओडिशा तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ। आज प्रथम थर करके इग्नोर केन्द्र रे स्किल भी शिखा जीवो। मयूरभंज जिले में जीतिकी वनस्पति अच्छी, जीतिकी श्रम शक्ति अच्छी, दीटा को जदि मिसा जाई पारे, सेठिकार जदि हमर गाँव लोक मानकु, आदिवासी लोक मानकु, पछुआ जाति लोक मानकु, वंचित वर्ग लोक मानकु, दलित लोक मानकु एआई को उपयोग करके, किए 8म क्लास पढ़ी, किए 12 क्लास पर्यंत परीक्षा दे न पारिकी काम को पलैछि, किए ग्रेजुएशन करला परे भी काम धाम न पाइकी बुलुछि, ताकू इग्नो सेंटर बहुत बड़ा सहायक हबो। ताकू एआई माध्यम रे नुआ नुआ विषय को जानिमा, पढ़िबा, पढ़ी की से ताकू निज को रोजगार उपयोगी करेबो। आप लोगों को मैं बताता हूं, मैं राष्ट्रपति महोदया जी की जो जिला है, उस जिले में इतना बड़ा बायोस्फीयर है, वनस्पति के एक भंडार है, जिसमें एक वहां सिमलीपाल करके उस वनस्पति की जंगल की नाम है, उसमें दुनिया के एक अजूबा जंगल है, दुनिया के मेकर, हमारे वहां इतना प्रचार नहीं हुआ है, इसीलिए उसको लोग कम जानते हैं। आप सब आइए सिमलीपाल घूमने के लिए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में कह रहा हूं, उसमें से वनस्पति के अलावा कम से कम 15 प्रकार की अलग अलग स्वाद की हनी मिलता है। ये सारा चीज अभी नया टेक्नोलॉजी, नया स्किल कैपेसिटी को यूज करते हुए अगर मयूरभंज जिले की सिमलेपाल की हनी, और मेरे को आज कहा गया वहां आज एनिमल हस्बेंड्री की टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा। उस जिले में, उस जिले की ख्याति है गोट के लिए, उस जिले की गोटरी के लिए अगर उसमें स्किल सिखाया जाएगा और उसमें एआई जोड़ दिया जाएगा, बाजार में कहाँ अच्छा गोट मिलता है तो मयूरभंज जिले में मिलते हैं, कहाँ मार्केट है वो एआई हमको बताएगा। ये सारे आने वाले दिनों में मयूरभंज जिले के किसान, मयूरभंज जिले के आदिवासी उसमें जुड़ेंगे, हमको अर्थनैतिक फायदा होगा। मैं अंत में फिर एक बार परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का माध्यम चुना,
खुद उसकी वो जिंदगी जिया है, इसीलिए उनके अनुभव से मयूरभंज जिले की, उड़ीसा के और भारत की पिछड़े वंचित इलाका को, प्रधानमंत्री जी की सपना है टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम एक नई भारत बनाएंगे जो आत्मनिर्भर होगा, स्वाभिमानी होगा, तभी जाके विकसित हो पाएगा। आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साल की पहला दिन साक्षी बनने के लिए आप लोगों को सौभाग्य मिला। मैं आपको भी शुभेच्छा देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके प्रेरणा और प्रोत्साहन से ओतप्रोत संबोधन के लिए। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी फॉर योर एड्रेस। And now, ladies and gentlemen, may I have the privilege and honor of inviting Honorable President of India and request Honorable President Madam to kindly address the August gathering and launch the National Awareness Campaign, #Skill the Nation Challenge. नया साल में राष्ट्रपति भवन के इस आरबीसीसी ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार जी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कंजीलाल जी, रायरंगपुर माननीय सांसदगण एवं रायरंगपुर में बैठे हुए माननीय सांसद श्री नवचरण माझी, मंत्री श्री गणेश राम खुंटिया, विधायक जलेन नायक, विधायक भादव भांसता, मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, मयूरभंज के कलेक्टर श्री साय, रायरंगपुर के सब कलेक्टर एवं सभी पदाधिकारी समस्त को नमस्कार। सभी को नया साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए एआई के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत फ्री एआई मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा एआई से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्वयं सीखकर अपने लीडरशिप थ्रू लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किया गया है। आज बच्चे जो वहाँ मैंने देखा फोटो उठा रहे बच्चे अपना सर्टिफिकेट इससे सामने दिखा के फोटो उठा रहे हैं। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को और बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे स्किल द नेशन चैलेंज की शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये इनिशिएटिव लाखों लर्नर्स को आगे लाने, अपने क्षमता बढ़ाने और भारत में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको नई तकनीक की सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और एआई लर्निंग मॉड्यूल्स पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आप संभावना और अवसरों से युक्त भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी तथा आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा करने, चुनौतियों के समाधान सीखने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइवन समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें। रायरंगपुर बसिथिबा सब विधायक, मंत्रीगण एवं सेठिकार सभी लोक प्रतिनिधिगण समस्त को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज नवा वर्ष रे आपण मान को शुभकामना देउछि। आमे सेठी आमर जो सेंटर खोला जीवो, स्किल सेंटर खोला जीवो, इग्नू यूनिवर्सिटी खोला जीवो, ताकू ठीक भाव उपयोग करवा, ताकू व्यवहार आनिबा, ए सब दायित्व आपण मानकर। तेणु किपरि देखर आर्थिक उन्नति हेबो, सामाजिक उन्नति हेबो, अर्थव्यवस्था लोकन को पाखरे सुविधा हेबो,
ए विषय रे चिंता करिवा आमମାନଙ୍କର काम बाकी ताकू केमती सफलता बनेबा आपण मानकर काम तेणु आपण माने ताकू लागि पड़ंतु एवं लोकमानक पाखक नियंतु लोकमानक सचेतन करंतु एवं लोक किपरि आर्थिक उन्नति करि पारिबे सेति पई प्रयास करंतु म आपण मानक बहुत बहुत शुभकामना देउछि धन्यवाद समस्त भारत माता की जय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आप सभी से निवेदन, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। May I request you all to please be seated? Thank you. And I'm requesting all the dignitaries on the dais to please sit in your designated seats. Thank you. And now for the session on artificial intelligence by Google. Ladies and gentlemen, may I invite on the dais Ms. Preeti Lovana, Vice President and Country Manager, Google India. Ms. Preeti Lovana ji. Sure. Now they all are. हम खेत संभालते हैं पर सच कहें तो खेती ने हमें संभाला है। हमारे पिताजी ना साइकिल रिक्शा चलाते थे, तब हमने सोच लिया कि अब बड़े होकर हम गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर बनेंगे। लेकिन दुनिया काफी बदल चुकी है, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं बारिश कब होगी, बीज कहाँ से लाए, किस दाम में बेचे। पहले तो बेटा भी मदद कर देता था, अब वो भी शहर चला गया नौकरी करने के लिए। मौका मिला था बड़े शहर जाके ड्राइवर बनने का, और हमारी जिम्मेदारियां यहाँ थी प्रतापगढ़ में। फिर एक दिन हमारा बेटा छुट्टी पर घर आया और हमें कहा सब कुछ फोन से हो जाएगा। अब परिवार को छोड़ के तो नहीं जा सके, लेकिन ड्राइवर बनने का मौका खुद चल के हमारे पास आया। प्रतापगढ़ में ड्राइवर की नौकरी मिलेगी। आलू सही दाम में कहाँ बेचे? और फिर क्या, निकल पड़ी हमारी गाड़ी। अगले 7 दिन की मौसम की जानकारी दीजिए। टैक्सी के लिए लोन मिलेगा क्या? हमने जो कुछ मांगा इसने सब दिया। अब मेरे सपने भी पास हैं और अपने भी। डिजिटल भारत एक बादल की तरह है और प्रगति तभी होगी जब ये सब पे बरसेगी।
Start. Okay, we'll get started. Good morning. Honorable Minister for Education, Shri Dharmendra Pradhanji. Honorable Minister, Independent Charge, Skill Development and Entrepreneurship, and Minister of State for Education, Shri Jayant Chaudhary ji. Honorable Secretaries, honorable and respected members of Parliament, senior government officials, academicians, students, thank you for inviting us. It's a privilege to be here, not just because it's a New Year day, an auspicious day, but it's so wonderful to be here and learning about the launch of the IGNOU Regional Center in Orissa. We are very passionate in Google about going to the grassroots and making sure that we bring the goodness of technology and AI to every part of India. And also to be here at the launch of Skill the Nation Challenge. Now, we often get the question as Google on how AI is really fueling India's growth. And it is very critical to understand that AI is not just a buzzword. It is not just the latest, hot term. It is a profound, transformative technology. It will change the way countries and nations work, how we do our jobs. It will provide inclusive growth, and most important for us as Indians, it will help our country to leapfrog ahead. We're just getting started. Google has been using AI and machine learning in its product and services for over a decade, though the term AI entered into the popular space maybe just 2.5 years ago. And what we built is deep expertise, and we bring not just the best of our foundational cutting edge models, we bring what we call the full stack, Puri 360-degree approach. We have the compute power. It is very expensive AI. You need a lot of compute power, you need a lot of infrastructure. Then we have the best of what we call frontier models. And then we have what is called the use cases to build on top of those models, which will actually drive the change and transformation I'm talking about. And with that, we bring a deep sense of purpose and mission to bring the best of our technology and infrastructure and work with the ecosystem in the country and with all of you to make sure our country is actually moving forward to realize the ambition we have of Viksit Bharat. I, along with my colleague Sashi Sridharan, who heads Cloud team in India, and Dr. Manish Gupta, who heads the Google DeepMind, that's the team does all the research and comes up with these models, and heads the DeepMind team for Asia Pacific region. We are here to share the potential of this amazing technology. I will now invite Dr. Manish Gupta to explain some more about AI. So, again, as many of you would have already heard, a key technology in AI is artificial neural networks, right? Roughly inspired by how the human brain works. And the counterpart of neurons are these neurons, which are very simple mathematical units arranged in layers, and then these layers are stacked together. And then these artificial neural networks are trained, and they can really solve pretty much every problem, almost any problem, anything you can compute, you can actually approximate that using these artificial neural networks. So what AI, you can think of AI as really a very, very powerful technology which is available to each and every one of us as an extremely powerful assistant, which is able to learn from all of the data that it is able to see in the world around us. And not only like access, retrieve information, it is able to think. Now, making sense of all of that data, it is able to think like a human, and it is now able to help us solve problems. So if you are a student, if you need a solution to a math or a science problem, there are now these AI applications which can help you solve those problems. For policymakers, when you have to make decisions on these very, very complex topics, you can get extremely comprehensive information and even some suggestions from these AI models. So
anything that we are doing as humans, we can take our work to a far higher level with the power of AI behind us. Next slide. So today, if we can go to the next slide. So today, AI is already solving so many problems in pretty much every field. Let's take a look at a few examples. I'll just use a few examples. Let's say health, which is extremely important. So in health, there is a saying, prevention is better than cure. If you can detect some adverse health conditions early on, for instance, there's this example of diabetic retinopathy. अगर जो आपको diabetes है, तो आप you might be susceptible to this condition called diabetic retinopathy, which can lead to blindness. So through AI models that we have developed with our partners, you're able to now screen for this condition before you are impacted by blindness. Today, AI models can help you predict forecasts. Even extreme weather events like cyclones, typhoons, they can be now very, very accurately predicted with the help of AI. And one thing which I want to emphasize, especially with so many of our honorable uh, members of parliament, that as you look at policy, uh, India, there is a potential for India not only to apply AI to solve all of these problems, but also make dramatic leaps in science. So if you can go to the next slide, a very shining example of the potential for AI to accelerate scientific discovery comes from something called AlphaFold, which was developed at Google DeepMind, and our two scientists, they received the Nobel Prize in Chemistry last year for this work because it solved a grand scientific challenge. Okay, proteins we know are the basic blocks of life comprised of chains of amino acids. What shape will those amino acids take? That's the problem of protein folding. And previously, it used to take an entire PhD to uncover the structure of a single protein. Now, this AlphaFold model does it in a few seconds. Now, with this, the Google DeepMind team made the predicted structures of all 200 million proteins known to humankind freely available to the scientific research community. And today, दुनिया में 30 लाख से ज्यादा scientists are using those protein structure for their research, including 1,80,000 scientists इंडिया में ही हैं जो कि यूज कर रहे हैं, and for a very broad range of applications. An obvious application is drug design, क्योंकि उसके लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जो आपको वायरस का जैसे पता चल गया कि क्या स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, नाउ यू कैन डिजाइन द ड्रग अकॉर्डिंगली टू अटैक दैट वायरस. तो उसके लिए अगेन ड्रग डिस्कवरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर drugs being designed for antibiotic resistance, vaccine for malaria, and even things like designing an enzyme to make the plastic degradable. Because plastic pollution is a major problem. A few weeks ago, we met this Indian researcher, Professor Chandrasekhar, who's using this uh, uh, AlphaFold now to design soybean crop to make it resistant to disease. Because again, pests affecting our crops is a huge problem for our country. Next slide. So now if we look at applying AI in a manner that we benefit each and every citizen of India, it is extremely important that AI must understand and speak each and every language of India, each and every dialect of India. And for us in India, a huge source, we are blessed with amazing diversity of languages. हमारी एक saying है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर वाणी. And that saying inspired a project Vani that we launched together in partnership with Indian Institute of Science, Bangalore. So Project Vani mein, we have been now documenting speech data from all of the different corners of India and making it freely available under the Government of India's Bhashini program. And of course, IISC's Vani website as well. So already through this project, which is in phase 2, we have released data set for over 31,000 hours of speech data has been freely made available to everybody. It covers 109 Indian languages.
And for 59 of these languages, this is the first documented data. These languages spoken by lakhs of people in India did not have any digital presence. तो अगर जो AI का मॉडल बनाना है, previously कोई उसका documentation ही नहीं थी language की, कोई data ही नहीं था. They used to be called zero corpus languages. We have uncovered already 59 such languages, और 8 languages ऐसी हैं जो कि लास्ट इंडियन लैंग्वेज सेंसस जो हुआ था 2011 में वो थी ही नहीं, वो recognized ही नहीं थी, which we have been able to uncover through Project Bhashini. So very, very excited that now I'm seeing startups like Shunya Labs, Sand Logic, using this data to build models that understand Indian voices. Next slide. Now I'll invite Shashi to talk about how it can really revolutionize farming and agriculture. Thank you, Manish. All of you agree that farmers are the bedrock of the nation. We're going to take a minute to talk about how AI will empower farmers. Imagine, and every piece of everything that we are discussing is happening at this point in time in the country. And there are big policy makers in this room who can actually take this to an extraordinary scale to create impact. And hence this topic is super relevant. Imagine AI's capability to really bring in insights and practice by bringing together, say, weather data, say, water table information, crop information, all of that together to create a very proactive insight and practice to our farmers, right? Imagine how they can use this to really enhance the yield from their existing land holdings. And all of us today realize that technology is the critical component here to really make sure that our existing land holdings can produce a lot more than what they are doing at this point in time. How do you bring all of that together? Now, the second aspect of this is how are you able to predict that yield? And that has serious implications, positive implications in terms of commercially, how are you thinking about your agricultural assets? You know, when you issue a loan, when you support a farming community or a food producer, how are you thinking about it? What's the predictability of that model? And these are pieces of work that's happening at this point in time. And all of it incredibly has a ton of usage of AI in a very big way. Also, disintermediation. We always hear that the farmers are not getting the best, even though they produce, they are not able to access markets, they are not able to figure out the best possible pricing that's available out there. AI brings all of that together. Now, the beauty of this whole journey in seed to market is also the fact that farmers are able to really take advantage of all these technology leverages and content and practice all in their local languages. So this is not going and doing this in English. This is all available in the local language of the farmer that they are most comfortable with, that their communities are most comfortable with, and that actually makes this way more powerful in terms of an impact. And then finally, you know that central government and state governments and a lot of nourishing agencies have a ton of schemes that are out there to support various types of farmers and various types of the sub-communities and audiences and different types of produce. But the sad fact is that the farmers are not able to understand or leverage or get that information in time. And now with AI, we are able to converge all of that in a very relevant manner and then provide that at the grassroots level so that the farmers can leverage the benefits at scale. So really wanted to talk about this today because this is a massive muscle that we require here in India. Thank you. Manish. So
So AI can, again, as we can see, truly transform areas like health, education, agriculture. And in fact, we are really inspired by the vision of the Indian government, where the Ministry of Education has set up centers of excellence in AI for each of these areas: health, education, agriculture. And we are again privileged to work with many of these institutes like Indian Institute of Science together with AIMS, which is developing these foundation models for health for India. And in fact, there are nonprofits like Khushi Baby, which have used AI models for screening of some 35 crore or 3.5 crore, sorry, tuberculosis screenings that they have done just in the state of Rajasthan alone. Uh, in education, we are working with, again, partners like Central Square Foundation, which are providing tools for teachers. Because now tools like Gemini, they can help teachers provide better and more effective learning plans for students. And for students, it can again provide personalized learning pathways. In agriculture, very proud of the work that my own team has done in Bangalore. We have built the first such models that, using satellite imagery, are able to identify farm boundaries, identify crops being grown, and we look at them as providing the low-level layers of a digital agri stack. Because once you have provided a unique identifier to each farm, similar to how Aadhaar provided a unique identifier to each human, and you allowed mobile payments, now you can unlock all of these use cases like farms, like loans, or uh, credit sorry, insurance products for farmers, as well as better targeted subsidies, where the governments can now get insights at an individual farm level, not just at a district or a village level. Next slide. So I'll now invite Preeti to talk about the role that India can play in this AI era. We are poised to lead in the AI era. Yes, there are countries that have developed the cutting edge models, but we have so many strengths, right? We heard from the Honorable Minister that Stanford has ranked India as being number 3 in terms of AI vibrancy, competitiveness. We have a very healthy developer ecosystem that is focusing on AI. You know, the AI startups are many, and we have very bright youngsters who are driven to be successful solving the multiple problems. Now, the key thing really is, how do we make sure? I'm not going through each of these, but the point here is the potential is amazing for our country. And we are here to partner to take this technology and help us realize the potential, like I said, at grassroots level. One of the key things that is an ask from all senior government ministers, officials, always to us and other big tech companies is, how do we ensure that we are not concentrated in the big cities, but we are going to tier 2, tier 3 cities, rural areas, and we are addressing all sort of income levels, socioeconomic levels, and making sure it's AI for all. At Google, we are deeply invested. You would have heard about us investing $15 billion in not just a data center, but also green energy and also undersea cables to make sure that we have low latency in all of the work that we do in this space. And it is very, Manish referenced the vision of the Honorable Minister of Education in creating these COEs. We have given millions of dollars in grants to these COEs as well. And for us, it's not about, hey, provide some funding. We offer our best expertise along with our cutting edge models. And so do others. The point I'm making here is, we want us as a nation to realize the potential. We are poised to lead, but we have to become leaders. Next slide, please. So there is a call to action and a request I have for all of you. You all are critical influencers or users who are going to drive our country forward. As I've said, as we've heard from our esteemed speakers earlier in the day, has the potential to be a great equalizer, helping our country leapfrog ahead. It is a strategic imperative for inclusive development and innovation. It will transform the lives of every single Indian. That will be seen in a few years. And it'll help us position India
as a country that is going to be Viksit, but also will have solutions that scale for the world. We deeply believe a solution that works in India, given our diversity, given our challenges that we have in terms of scale, will work in any part of the world. And we have the potential to lead the way. So let's do this together. इसके लिए हम सबको हाथ पकड़ के हाथ जोड़ने होंगे because not one single person in the ecosystem can do it. One is we have to all ensure that AI is inclusive. Manish spoke about Indic language capability. We can't have models developed in the Western world on their language and their context. It's not just about language, it is our context. And I've said this earlier, if we are talking about health models that provide some guidance to women in maternal health care, we think about, are we talking about Gond ke laddus, when we talk about post-maternity care? So Indic language, our local cultural context is very critical as we talk about building this capability. And that's how it will be accessible and useful to every citizen. Citizens and users adopt technology if it adds value to them. And that's why this context is important. Dusri baat, and this is a request to all the honorable ministers, secretaries, members of parliament, sirs and ma'ams, please, in anything in technology, in particular in AI, even in big companies like Google, we start with small experiments. In your constituencies, please pick use cases. चाहे आप एजुकेशन में देख रहे हैं, चाहे आप हेल्थ में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, किसी भी एरिया में देख रहे हैं, please take the first step, and there'll be many of us. Google is here, others are here. The vibrancy of our startup system and the hunger and ambition is there. We will partner with knowledge and do it together, but we need those pilots to start. And if we see some of those pilots working well, AI ki advantage ye hai ki it scales very quickly to crores and hundreds of crores. So it doesn't go through the typical cycle ki ab ye 10 saal ye hua. You prove the model and the technology will take it to scale. So call for action to all of you. Please start those experiments and we are here with you. Third is, and this is a request, in any new technology, there is this whole push and pull of ki regulation kitni chahiye and how do we allow innovation. And like that in AI as well, we need to strike the right balance that we are allowing innovation, allowing accessibility so that every Indian can get access to this technology quickly, and balancing it with the kind of pressures or the regulation that we bring in. So just getting that balance right so that our country can move forward. And lastly, like I mentioned, we are deeply believing in this, that make in India, scale it to the world. I mean, our DPI stack is the talk of the whole world, right? And how we have done it in India. It's the UPI. And when we talk about even ONDC, we have proven it. And we can take this. So global collaboration, create local value. There's a lot of talk. Should it be this or that? And I always say join hands, given where our country is, given our ambition for Viksit Bharat, it is always and. This and that, join hands, global collaboration, and we move forward so that we are more competitive, we are inclusive, and everyone wins. Thank you so much. Thank you, Ms. Preeti Lobana ji, Vice President and Country Manager, Google India, and Mr. Manish Gupta ji and Mr. Shashi Sridhar ji for this session on artificial intelligence by Google. And with this, ladies and gentlemen, we wrap up, we sum up our today's event. Thank you so much for joining in. We thank all our dignitaries and esteemed guests for joining. And please do join us for the refreshment now. Thank you once again. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.